दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में शनिवार को XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने फ्रेंच डेनिश शैक्षणिक सहयोग की घोषणा करी है। XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस पैंथियन सोरबोन, यूनिवर्सिटी डी बोर्डो और डेनिश कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक क्राफ्ट्समैनशिप DCAC के सहयोग से और IIECO इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटी के सहयोग से एक फ्रेंच डेनिश सहयोग के आधिकारिक शुभारंभ किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक प्रबंधन और अनुसंधान में इस समझौते के द्वारा एक नया मानक स्थापित करेगा। भारत, फ्रांस और डेनमार्क के संस्थानों के बीच प्रेस वार्ता में एक अधिकारी घोषणा करते हुए बताया जाता है कि यह तीनों देशों के आपसी समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 विकसित भारत के सपने को भी बल मिलेगा। युवाओं में एक नया टैलेंट उभरेगा। इस यूनिवर्सिटी के कोर्स छात्रों के लिए काफी मददगार साबित होंगे। छात्रों के लिए वरदान साबित होगा। स्किल डेवलपमेंट के उद्देश्य से किया गया ये समझौता ऐसे युवाओं के लिए बहुत अच्छा साबित होगा जो कि विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे। उन्हें भारत में ही यह सब पढ़ने का मौका मिलेगा। बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी ग्लोबल स्तर पर मास्टर डिग्री के कोर्स भी कराए जाएंगे जो कि विश्व स्तर ये कोर्स होंगे। इस अग्रणी साझेदारी का उद्देश्य शैक्षणिक आदान प्रदान, संयुक्त अनुसंधान, संकाय विकास और अंतर्राष्ट्रीय छात्र अवसरों को मजबूत करना है। इस शुभारंभ समारोह में सभी सहयोगी संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि सहयोगात्मक शिक्षा के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा किया। प्रबंधन शिक्षा में अपनी तरह का पहला भारत फ्रांसीसी डेनमार्क के बीच गठबंधन हुआ है। वैश्विक शैक्षणिक सहयोग में भारत की भूमिका को मजबूत करना, संकाय विकास, छात्र विनिमय और संयुक्त अनुसंधान के लिए नए रास्ते। सभी सहयोगी संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में। We have initiated this collaboration because we are going to develop certificate courses and little by little more, perhaps a master degree at one moment. We have a range of master degree in Paris, and all the master degrees are located in several countries. Actually, we have 12 agreements in the world with China, with Vietnam, with North Africa, in Algeria, for example. Next weekend, I will be in Algiers to give a course in an MBA. So each professor of Sorbonne Business School stay 3 months, more or less, a year outside in these countries, teaching in French, in English, sometimes in Spanish. And concerning Xlri and India, we initiate a collaboration, and I am very happy to have also a Danish school with us, because we have done that, for example, in Vietnam. In Vietnam, we have a collaboration with Bologna in Italy, inside our degrees. So after is another coordination of Xlri, we are going to see which kind of courses. We have already discussed about the courses, about healthcare, as I said, about consulting, about digital leadership or things like that. So after that, my idea today with Xlri today is to say and to see in which area Sorbonne Business School can support the existing degree of Xlri. So Xlri has a degree with a certain number of hours and credits. So we can say we are going to assume all additional credits to have the Xlri degree and additional credits and certificates from Sorbonne, for example. This is one solution. The second solution at one moment, after you have experimented this first option, is to say, okay, so inside a master degree, I'm going to take in charge the half of the courses, you are going to take in charge the half of the courses, and finally we are going to deliver a joint degree. So we are initiating a collaboration, and we are going to see little by little to which in which areas, if we are continuing to develop certificates only, or if one day we go to a master degree. I suppose in some years we can have a joint degree, a common degree in the area where we have experimented the certificate, and finally in the area where we think the students take the high benefit to have this collaboration in these two visions. What about placement? After this, as you said, the plasma, I think, and it is also what asked us our partner in other countries, is to help students graduate of the country to have a better understanding of the European context,
And of course, is for people who have the ambition to be international. This is the first target. The second target is to say, okay, perhaps I have not the ambition to be international, but perhaps what I learned with Xlri and some professor from the Danish school or from my school is something else to impact and modify the local companies. We were in China since 35 years. 35 years. We are not doing agreement for 2 years or 3 years. The average length of my agreement actually is 20 years. So I'm going to try to do the same and to be at least 20 years or 30 years with Xlri. I'm just not doing 2 years here, 2 years here. If I do only 2 or 3 years, it's not a good thing. We invest a long time in relationship, in discussion. It's not just to have only 20 students or 50 students and to go. So my ambition is to say, and it's also a demand from, for example, Chinese students, they want to learn from the French feeling of management in order to modify also the management inside pure Chinese companies, because they think that the management or we have the same concept in management. You have not a different ROE is learned in Danish system. In France, so it's the same. So perhaps the critics on this ratio, the critics on this concept will be different from a country from the other. So we are going to say to students, okay, if you see all the books on that, they are saying the same thing. But me, I have perhaps a different vision. Thank you, sir. I especially learned that here in India that actually we are not talking about the end date, because you just continue in the next life when we're looking at the human body. So that's actually a European mindset to it, that we have an end date. But I also into this loop because we are here for good. Thank you, sir. Thank you. The fact is that people wait. They wait to be different. If not, you go to teach with a professor from US or UK, and you don't need a French professor or a Danish professor. If you learn, and if you want to teach more or less the same concept, we have a different way to see that. I was in a lot of conference with a US professor and so on, in international conference. We speak about the same concept. We have not the same arguments. And we have not the same critic spirit about the concept. So it's different. It's not better. It's not bad. It's different. So if you have to experiment European partners, and it will be different. After that, each people decide if they maintain the position, adapt the position, or change the position. I would say is that I would like to referate to Mr. Moody. When he went to Denmark, he said that Denmark has the skill and India has the scale. So we are here to bring this intention. Thank you. Okay, thank you. देखिए, हमारे देश के बच्चों को इंडस्ट्री को जो चाहिए है, अगले विकसित भारत के जो हमारे उद्देश्य को ये सफल बनाने के लिए, उसके लिए जो हम लोग पढ़ाते हैं, उसमें काफी बदलाव आता है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको सिर्फ जो है इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, उनको साथ में ग्लोबल सिटीजन बनना है, क्योंकि आगे जाके जितना भी हो, लोगों को इंडिया जब बढ़ेगा, आगे डेवलप होगा, तब हमारा जो बाकी देशों के साथ रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है। और उसी चक्कर में जो है, हम लोग को थोड़ा अलग नजरिया लेके प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट, ये सब करना है। और उसी वजह से हम लोग सब पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, और आज हम लोग इस जगह पे आ चुके हैं कि हम लोग
कुछ नया दे सकते हैं। ये देश के हिसाब से देखो तो एक छोटी सी, एक सागर में एक छोटा। देखिए, पहल को हमें दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक होता है रेगुलर 2 ईयर का जो प्रोग्राम होता है, जो रेगुलर बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, और एक प्रोग्राम होता है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जो ऑलरेडी कंपनीज में काम कर रहे हैं 15 साल से 20 साल से। आप लोगों ने बहुत ज्यादा मोदी जी का एक आपने सुना होगा कि हमको हमको उनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार करना है। तो अब 15 साल से मैं कुछ काम कर रहा हूँ, पर अगर मेरे को अपने आप को अगले 15 साल के लिए रेलेवेंट रखना है तो मुझे किसी और तरीके से तैयार होना पड़ेगा, हमको नए स्किल सेट सीखने पड़ेंगे। तो इन सब प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग नए स्किल सेट को पुश करने का कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट को देखें, अभी तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट मोस्टली हमारे डॉक्टर्स करते थे, ठीक है, बट हमको एक स्पेशलाइज स्किल चाहिए। फाइन। अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे, हॉस्पिटल इंडस्ट्री या हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, दिस इज टिपिकली ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट, और हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है। प्लस हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में मेडिकल टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं। तो अगर हमको उसको नए स्केल पे लेके जाना है तो हमको एक ऐसा प्रोफेशनल चाहिए जो उन हॉस्पिटल्स को, उन हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सके। इस सब टाइप के प्रोग्राम्स हमको उन सब चीजों में हेल्प करेंगे। जो संतोष सर ने बोला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगले 20 साल के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है और हमको इंडिया को ग्लोबल स्केल पे लेके जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये उसकी एक छोटी सी पहल है।